welcome back to my channel Edulon Education. So today we all are going to do chapter Real Numbers from our maths textbook. We will be starting with exercise 1.1 from our NCERT textbook. So first question says express each number as the product of its prime factors. So first question, first part, 140. 140 we have to do, right? So 140 says 2 sevens are 14, 2 threes are 6, 2 fives are 10, 5 sevens are 35, 7 ones are 7. So 140 would be expressed as 2 square into 5 power 1 into 7 power 1. Second part says 156. 156 would be done as 2 sevens are 14, 1 6 16, 2 eights are 16, 2 threes are 6, 1 8 18, 2 nines are 18, 3 ones are 3, 3 threes are 9, 13 ones are. So 156 would be expressed as 2 square 3 power 1 into 13 power 1. We have to express it as a product of prime factors, means we have to do prime factorization for that number. We have to do is prime factorization for that number. And what are prime numbers? Which have only two factors, 1 and number itself. 2 is the only even prime number. Third is 3825. Third is 3825. 3825 says 5 sevens are 35, 6 7 8 3 32, 5 6 are 30, 2 5, 5 5s are 25, 5 ones are 5, 6 7 26, 5 5s are 25, 5 3s are 15. Now 5 6 7 8 9, 3 5s are 15, 3 ones are 3. Next comes our 6 again, right? 3 ones are 3, 3 sevens are 21, 17 ones are. So 3825 says 5 square, 3 square, 17 power 1. Fourth is 5005. 5005 says 5 ones are 5, 5 zeros are 5 zeros are 5 ones are 5. Not 5 again, right? It will go to 7. 7 ones are 7, 8, 9, 10, 3, 0, 30, 7 fours are 28, right? 21, 7 threes are 21. Then 4, 1, 5, 6, 7, 8, it would go to 143, right? You can go take 143 now to 11. 11 13s, right? I guess 11 13s is 143. Yeah. So, and then 13 ones. So it would pose 5 1, 7 1, 11 1, 13 1. This would be our prime factors. Fourth says fifth says 7429. This is a quite big number. So in order to do the prime factorization for this number, 10 तक तो है ही नहीं इसका कोई फैक्टर, ना ही 2 है, ना ही 3, ना 7, ना 11. तो आपको इससे भी आगे अपनी थिंकिंग को लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जा रहा है हमारा 3 नंबर्स, जो है 17 power 1 into 19 power 1 into 23 power 1. These are the numbers on which it would go. Alright, next we have now second question that says us to verify as well. That says us to verify it as well. This could come for big one, right? Alright, now second is 26 and 91. 26 and 91. So we can make the prime factors orally now. 26. It would go on which numbers? It would go on 2. Right? 2 ka square. No, only 2 into 1 into 13 power 1. Then 91. It would also go 13
and 13 power 1 and 7. 7 power 1, right? So what would be our HCF? It would be 13 power 1. LCM, it would be 2 into 7 into 13. 2, 7, 13. What would it be? It would be 182. 14 into 13 is 182. It's visible now. 182. Right? Now LCM into HCF is equal to first number into second number. 182 into 13, 26 and 91. 6 ones are 6, 9 6 we'll just do it directly, right? 182 into 13, right? It would be 2366 is equal to 2366. Hence verified. So rest two paths are also like this. Rest two paths would also be like this, but I could just say that if I'm just giving example in this. If it would be like here 2 power 1 and here 2 power 4. So you will take HCF as 2 power 1 and you will take in LCM only 2 power 3. Only 2 to power 4 would be multiply, not 2 to power 1. Because in LCM we will see which one poses the greatest power. This one, right? So we will not take this 2. We'll take this. This is 13 1 13 1, so we'll take 1 time 13 and 1 time 7. If it would be 7 to power 4 and 7 power 1 over here, we will take 7 power 4 instead of 7 to power 1. Right? Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. By applying the prime factorization method. Right, first is 12, 15 and 21. 12, 15 and 21. So how you will do it? 12, right? 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Now let's go for 15. 5 3s are 3 आएगा वैसे तो ऊपर 3 1s are, right? Then we have 21 here. 3 7s are 7 1s are. So 12 would be 2 square into 3. 15 5 1 into 3 1. 21 3 1 7 1. Now if I talk about HCF, we can see only one number is common, 3 3 3. So my HCF is 3. But if I talk about LCM, 3 की power 1, 7 5 2 square. 5 2 square. Now why did I not take 3 times? That's because I told you अगर तीनों में एक बार एक चीज कॉमन है, हाईएस्ट पावर वाला हम लेने वाले हैं. So 7 3s are 21, 2 2s are 4, 5 4s are 20, 21 into 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. It would be 420. Our LCM is 420 and our HCF is 3. Is it clear? If you pose any doubt, please post it in the comments. Alright. Moving on to the second part for now. Second part says 17, 23 and 29. We know 17, 23, 29. It would be 17 power 1, 23 power 1, 29 power 1. Why so? Why did I not do prime factorization for these three numbers? Because I knew these are prime numbers and they would have only two factors. That's 1 and the number itself. So when there is no common, when there is nothing common between the three numbers, the HCF is always 1. The HCF is always 1. And if I talk about LCM, it would be the multiplication of three numbers. That is 1 1 3 3 9. I hope it's clear. When the three numbers
two numbers only have only nahi, does not have anything common between them, then the HCF would always be 1. Then the HCF would always be 1. Then the HCF would always be 1. I hope it's clear. Moving on to the next part, not question. Next part is 8, 9, 25. Very basic, right? 8 क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. 9 कितना हो जाएगा? 3 into 3 9. लेकिन अगर आप 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे ये आएगा 3 3 3 5. 25 5 into 5. This also has nothing in common, right? So, what would be its HCF? It would be 1. Its HCF would be 1. You will write it as 2 cube, 3 square, 5 square, and then your LCM would be 2 cube, that's 8 to 9 into 25. It is 72 into 25, which would give us 1800, which would give us 1800. So, is that clear to you all? It's very easy question, right? LCM and HCF is the concept we are doing from our 3rd, 4th class, right? Not a big concept or a new concept at all. Next, 4th question, a bit kind of like थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला. Given है कि HCF 2 numbers का 9 है, LCM बताओ. अब हमने वो पढ़ा था रिलेशन. अब कई बच्चे क्या करेंगे? 2 numbers दे रखे, HCF दे रखे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, LCM निकाल देंगे, but it's not to be done like that. You will do it like LCM into HCF, first number into second number. What's my LCM? Not given. HCF 9. What's my first number? 306. Second number 657. Multiply them. Multiply these two numbers. What will we get? We'll get 201042. 201042. Then LCM कैसे आ जाएगा? आप 9 को उधर शिफ्ट करके, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, राइट? It would be upon 9. So अब 9 2 ज़ा 18, 19 20 21. 9 के टेबल में 21 तो नहीं आता. Again 2 ज़ा 18 3 31. Now 31 भी नहीं आता. 9 के टेबल में 3 ज़ा. Wait, are we doing it wrong? I think so. It would be 22338. Yeah. 18 18. 9 3 is 27. 27 till here 8, right? You have to show the calculations while your board exams, right? It's important to show the calculations, and always remember, put margin line before you give your board exam. You will not do the calculations in the middle of nowhere. Alright, you will do all the calculations with the pencil, that too at the last of your sheet, last sheet of yours. Next है 5th question. Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. अब 6n मेरा नंबर है, हमें बताना है कि हम यहाँ पे n की जो मर्जी वैल्यू ले, क्या जो मेरा नंबर है वो 10 से एंड कर सकता है. तो इसमें लगेगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. वो क्या कहता है? ईच एंड एवरी नंबर हैज यूनिक फैक्टराइजेशन. तो 6n की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 into 3n. अब अगर मेरे को 10 चाहिए, so there should be two things, that is 5 into 2. Then only I would get 10 here, 10 at the end of the 6. So you will write according to the fundamental theorem of arithmetic,
10 has a unique factorization as 5 and 2, but the given number lacks that factorization. That's why 6 cannot end with the digit 0 for any natural number n. Is it clear? It's very easy question, right? Explain why. Now this question is good. 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. So you will take 13 as common. 7 into 11 into 1 plus 1. Now you will say as 1377 plus 1, 13 into 78. As it has more than 2 factors, इसकी भी prime factorization करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. Okay, you will write as 13 into, what's the prime factorization for 78? Let's do it out. 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3 3s are 13 1s. 2 per 3, 13. 2 3 13. So as it has more than 2 factors, hence it is a composite number. Hence it is a composite number. Now next one of the same is 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. You will take 5 common. यहाँ पर हमेशा 1 लाना है आपने जैसे तैसे. 7 into 6 into 1 into 4 3 into 2 1 तो छोड़ ही दो है ना, plus 1. So what would it be? You will just multiply all of them. You will get 1008 plus 1. 5 into 1009. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके आगे लिख देंगे. As this number has more than 2 factors, hence it is a composite number. 1009 किसने कह दिया प्राइम नंबर है. Now next question, very important question. There is a circular path around a sports field. एक circular path है around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया कितने समय लेती है? 18 मिनट एक राउंड के लिए. While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब ये क्वेश्चन में अगर आपका जो आंसर आपको कॉमन सेंस से लगता है कि दोनों वैल्यू से ज़्यादा ही आएगा तो एलसीएम लेंगे, और अगर लगता है कि इन दोनों वैल्यू से छोटा आंसर आएगा मेरा तो आप एचसीएफ लेंगे. जैसे मान लो आई हैव दीज टू कंटेनर्स. ठीक है, इस कंटेनर में 500 ml ऑफ फेविकॉल आता है. इस कंटेनर में 50 ml ऑफ फेविकॉल आता है. इसमें 500, इसमें 50. ठीक है, एक के अंदर 500 ml फेविकॉल है, एक के अंदर 50 ml फेविकॉल है. 500 ml 50 ml. अब मेरे को इन दोनों को खाली करना है. इन दोनों को क्या करना है? मैंने खाली करना है. तो मैं खाली कैसे कर सकती हूँ इनको? मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए होगा कि मैं उतने की कार्टन्स लेके आऊँ तो उसमें खाली हो जाएगा. तो डिवाइडेड बाय 1 नहीं जाएगा दोनों. अरे 1 तो छोड़ ही दो ना, 2 से डिवाइड करो. जा रहे हैं 2 से, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो एक 2 भी नंबर हो गया मेरा. हो गया. 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से भी चला जाएगा. तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो ये 2 वैल्यूज थे इनसे छोटा आंसर आ रहा है दोनों बारी. तो यहाँ पर इन केस में मैं क्या लूँगी? एचसीएफ सॉरी. तो इस केस में मेरे को बताया सोनिया ने 18 मिनट लिए एक राउंड के लिए, रवि ने 12 मिनट लिए. दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं तो सोनिया को तो आने में भी 18 मिनट लगेंगे ना, जबकि रवि ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका होगा. तो यहाँ पर आप क्या लेंगी? एलसीएम लेंगे. क्या लेंगे? LCM. You will say 12, 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1s are 3, and 18, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 12 2 square into 3 power 1
18 to 1 इंटू 3 स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. अब यहाँ पर हमने हाईएस्ट पास लिए 4 इंटू 9, 36 minutes. So they would need 36 minutes. Moving on towards our next exercise. बहुत इजी एक्सरसाइज है, यूं ही बना रखा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये कैसे प्रूव करना है हमको तो समझ ही नहीं आता. ठीक है, दिस इज ऑल द मेथ, इट वुड बी सॉल्व्ड जस्ट. हम सिर्फ कुछ ही पार्ट्स कर रहे हैं, इसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है वैसे तो. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. अब हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं. पहले क्या करना है, आपने कहना है रूट 5 इज, लेट करना है, लेट रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू आर को प्राइम. बताती हूँ को प्राइम क्या होते हैं. को प्राइम. क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस पी एंड क्यू है मेरे जो है वो इंटीजर्स. क्या है मेरे इंटीजर्स है. उसके बाद रूट 5. अब को प्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF हमेशा 1 होता है, जैसे 17 और 13 राइट, उनका HCF क्या होगा 1 होगा. अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे. यहाँ पे रूट है ना, मेरे को रूट नहीं चाहिए. रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर. ये क्या बन गया 5 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. अब क्यू स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरी. क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5. मैं लिखूंगी इफ माई पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन माई पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अब ये कैसे हुआ ये समझते हैं. अब ये मेरा कैसे हुआ हम इस बात को समझते हैं. अब मैंने लिखा 25 डिवाइड होएगा 5 से, तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना. इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, if the square of a number is divisible by other number, then its square root also would be divisible by that same number. ये हमारी होती है एक थ्योरम. क्या होती है, एक थ्योरम होती है जिसको इस क्वेश्चन में यूज किया जाता है. फिर अब मेरे को पी स्क्वायर कर दे, क्यू स्क्वायर भी तो प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा था को प्राइम है, तो मेरे को दोनों के लिए एक कॉमन डिविजिबल फैक्टर 5 लाना पड़ेगा जिससे हमारी सुपोजिशन रॉन्ग हो जाए और रूट 5 इरेशनल हो जाए. क्लियर हुआ इतना. फिर मैंने करना है दोबारा से लेट. अब p, इस p को 5 टाइम्स ऑफ r मानना है. जो भी मेरे नंबर होगा रूट में वो ही आएगा यहाँ पर. ठीक है, फिर पुट इन 1. 5 is equal to p square by q square. Sorry, this is not our first equation, this is our first equation because 5 से 5 भी तो हमने कट करना है. तो ये हो गया q square is equal to p square by 5. लेकिन मैंने p को तो क्या माना हुआ है 5r, तो q square is equal to 5r by 5. 5 से 5 कट गया, 5r का स्क्वायर था ये, तो ये q स्क्वायर क्या हो गया 5r. q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू r. तो अब अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी तो मेरा 5 से डिविजिबल होगा. वो अभी मैंने केस समझाया था जो, तो फ्रॉम फर्स्ट a एंड b, फ्रॉम a एंड b आगे थ्योरी लिखेंगे. From A and B, P and Q have common factor as their 5, which means, लेकिन हमने दोनों सपोज करा था क्या है, वो को प्राइम नंबर है, यानी सिर्फ एक ही होगा उनका कॉमन फैक्टर. बट हमने यहाँ पर अपने प्रूफ में प्रूफ कर दिया कि जो हमारे P एंड Q है उसके अंदर जो मेरा 5 है वो कॉमन फैक्टर है, जिसकी वजह से वी विल राइट from A and B, P and Q both have common factor as 5. This means that our supposition is wrong and root 5 is irrational. Root 5 is irrational. अब अगला क्वेश्चन है 3 plus 2 root 5.
3+2√5 अगर 2 नंबर में आता है प्रूव करने को, तब तो जैसा मैं अभी कराऊंगी वैसा करना। लेकिन अगर आता है ये 3 नंबर में, तो पहले आप √5 को इर्रेशनल प्रूफ करोगे, उसके बाद उस पूरे को इर्रेशनल प्रूफ करोगे। समझ आ गया? वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3+2√5, लेट करना है इसको p/q है ये मेरा, जहाँ पर मेरे p और q क्या है, इंटीजर्स, q 0 के बराबर नहीं है, pq है मेरे को प्राइम नंबर। फिर मैंने बोला √5 इसमें ऑलरेडी मेरा इर्रेशनल हैगा है, 2 नंबर के हिसाब से है, तो 2√5 p/q माइनस 3/1। अब इसमें हम ले लेंगे एलसीएम एंड ऑल, अपॉन में q p माइनस 3q। अब ये √5 में से भी इसको ले जाओ उधर, 2q। अब लिखेंगे आप p q 3, 2 are all integers, which makes this expression as rational. So this shows that our √5 is irrational. This shows that irrational is equal to rational, which is not possible. This means that our supposition was wrong and 3+2√5 is irrational. 3+2√5 is irrational. Next है हमारे पास 1/√2। 1/√2 को भी हमने बोला है p/q के बराबर है। इसको तो पहले करो रैशनलाइज। √2/2 इज इक्वल टू p/q। यहाँ किस में है डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लाई में कर दो, 2p/q। अब p/q मेरे इंटीजर्स थे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये हो गया मेरा क्या, 2p and q आर इंटीजर्स, बट √2 इज इर्रेशनल। अब इसके अंदर भी √2 का प्रूफ लिखना पड़ेगा। √2 का प्रूफ क्या होगा, वो चलो वो भी कर लेते हैं एक बारी। √2 इज इक्वल टू p/q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू p²/q²। q² उधर गया, p²/2, यानी p² is divisible by 2, then p is also divisible by 2। फिर लेट करेंगे क्या, लेट p is equal to 2 of r, put in 1, तो ये हो गया मेरा q² is equal to 2r का स्क्वायर बाई 2, एक से एक 2 कैंसिल, q² is equal to 2r स्क्वायर था। फिर ये 2 को उधर ले जाओ, this means that q² is divisible by 2 and q is also divisible by 2. This shows that p, q, they have common factor as 2. So our contradiction is wrong। ये लिखेंगे √2 irrational होगा, यहाँ पे √2 irrational रेशनल के बराबर है, which is not possible. Hence our supposition is wrong and it shows contradiction. Hence 1/√2 is irrational. It's irrational. अब है 7√5, इसमें भी पहले आप √5 वाला लिखेंगे प्रूफ इर्रेशनल का फॉर बेटर मार्क्स। 7√5 इज इक्वल टू p/q, ट्रांसपोर्टेशन मेथड से p/q की वो भी लिखनी है जो हमने माना हुआ है, सारी कंडीशंस। तो यहाँ पर ये रेशनल है, यहाँ इर्रेशनल है, irrational cannot be equal to rational. This shows that our supposition is wrong and shows contradiction, and 7√5 is irrational. Next आ जाता है हमारा 6+√2 is equal to p/q। यहाँ पर वो सारी कंडीशंस लिखनी है वरना हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है आपका। p/q into 6, √2 is equal to 6 of p/q। अब ये √2 का irrational प्रूफ करना भी पहले लिखा होना चाहिए। यहाँ लिखना है दिस इज रेशनल, दिस इज इर्रेशनल, इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, हेंस दिस शोज कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 6+√2 इज इर्रेशनल। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। दिस इज 100% वाला क्वेश्चन कि हाँ आएगा ही आएगा। सो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट, एंड मुझे ये भी पता है कि जो मैंने क्वेश्चंस छुड़वाए हैं आप प्लीज़ उन्हें घर पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको भी वो करने आ जाए।
अभी के लिए हमें सब क्लियर हो गया कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखनी है, कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं, पी क्यू इंटीजर्स हैं, पी क्यू को प्राइम है एंड क्यू जीरो के बराबर नहीं है। यू हैव टू राइट इट ऑलवेज। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको सब समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।